We are going to do today conduction, convection, and radiation. Conduction. So first we'll write conduction. What is conduction? To understand conduction is very simple. To understand conduction, first we will start with a slightly off topic called Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law says that if there is a resistance, okay, and there is a potential difference V across it, and the resistance is R, and the current flowing through the resistor is V by R, or V is equal to IR. Okay, fine. What is V? You have to write in words. Okay, what is V? But tell me. No, not volts. Volt is a unit. The potential difference. Potential difference kiske across? The wire. Across resistor R. Okay. What is I? Current flowing through it, right? Current flowing through R. Okay. And what is R? R is resistance of the material. It is something geometrical as well as material property, right? R comprises of geometrical as well as material property, right? R होता है, पता है ना, rho L by A होता है. तो ये जो rho होता है, this is a material property, material, what it is made up of, and the L by A thing is the geometrical parameter key. What is the geometrical shape of this, okay, object? You know this already. Next thing you write, same thing. What is difference means? If there is V1 and V2 here, and then V1 is greater than V2, then current will flow from which direction? From V1 to V2. From V1 to V2, yes, current will flow like this. Okay. And here you will write V1 minus V2 is equal to IR. Okay. So it is the difference which matters. Okay. Write this. V1 minus V2 is equal to IR. You must understand the essence of this equation. The essence of equation is the difference. The difference is equal to what flows into the R. This is the essence of this equation. Okay, difference, the potential difference is equal to IR. So what flows into the resistance? Fine. Okay. Now, having said that, imagine heat is flowing through a rod. Okay, let's say there is a, let's say, suppose you are cooking something. Okay, if you sometimes you're cooking something, if you observe that if you use a ladle of wood, right, you can stir the thing for a longer period of time. But if you use a ladle of iron or steel, it gets hot after some time, right? So what is the probable reason? Of course, the reason is steel is a good conductor of heat and wood is not, right? Okay, so therefore so we are studying conduction. Kiska conduction? Heat conduction. Heat conduction mein, how does heat conduction happens? First listen this, how does it happen? So suppose there is some hot liquid here. Okay, hot liquid here means its temperature is higher, so the T1 is higher. Okay, its temperature is T1. Okay, and then what you do is you put a steel rod in it. Okay, steel rod. So let's say the iska 80 degree, T1 was 80 degrees Celsius. Okay, let's say. Quickly. तीन ही है ना, माही, तुलिका और एक और ऋषिमा. ठीक है. ओके, लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस है. ये लैडल, इसका स्टील बार का टेम्परेचर कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? रूम टेम्परेचर कितना होगा? 30. ठीक है, लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस. अब होगा क्या? व्हाट विल हैपन? एज देखो 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब आई टोल्ड यू टेम्परेचर इज नथिंग बट हाउ is a measure of how fast the atoms are vibrating, how much kinetic energy they have, right? That means this thing, no, this liquid which is there, iska atoms are vibrating faster. They are 80 degrees Celsius. Whereas the steel bar, the spoon or the thing which you put,
का temperature is 30, so इसके molecules are vibrating slowly, right? Now what will happen? The higher energy molecules of the liquid or the hot water will go and collide with the lower energy molecules of steel bar. Okay, and what will happen? The steel bar molecules will also gain energy. So it is transfer of momentum. Very simple, transfer of momentum, right? These molecules have high energy. They will go and collide with the lower energy molecules. So the red molecules will also get, यहाँ पे molecules will also get energy. Understood? And this is how it's, and then these transmit this energy to this molecule, then this molecule, then this molecules. When I say transmit this energy, they are just what? Vibrating faster. Okay, fine. And that's why you might have done an experiment or seen an experiment in a lower grade, some 6th, 7th, 8th grade. What they did was they put up a steel bar. Okay, steel bar. And then what they did was they stuck some candles, sticking candles is like you Put the wax, heat it, slightly heat it, and then put the candle like this, or not like this, but ulta. Okay. Okay. So put some candles here. Okay. उल्टा लगा दिया इसमें, ठीक? उल्टा लगाया, उल्टे हैं, ठीक है? They are मतलब hanging, but they are stuck because they are wax which are solidified. Okay. Fine. And now what you do is you start heating it from this end. You start heating this rod from this end. This red is a steel rod. What will happen? First, this candle will fall, right? Then this candle will fall, then this will fall, then this will fall, then this will. Understood? This is going to happen, no? That means वो क्या हो रहा है? यहाँ के molecules are getting agitated, which are then transferring this agitation to the right molecules. Okay, so this agitation is transferring right. Understood? Mechanism, have you understood how conduction happens? Okay. Okay. Now, tell me very simple, a few simple things. This agitation is transferred, right? If the cross-section area of this rod, I mean this area of this rod, was higher, this agitation would be higher or not? This transfer of energy would be higher or not? It wouldn't be, right? Because more particles have to like be agitated to move from one side to another. So you are saying more particles, More heat should be supplied. More heat should be supplied. Okay. So what I'm doing is I'm applying the same amount of heat, applying the same. So there is a burner here. Okay. There is a burner here. Okay. And there are two rods. One rod is like this, and one rod is thoda sa aur, I mean the cross section area is bigger. Okay. Now, एक मिनट पहले मुझे याद कर लेने दो. The second one will have higher conduction. Why he's saying second one will have lower conduction? So because I don't agree or disagree with both of you. So I don't know. I'll have to figure it out. yeah, because more molecules are transferring energy, Looks like it. but don't you think like more heat for more molecules? But I said heat is same. I said heat is Yeah, same. heat is same, Okay. so- Now So, heat transfer. हाँ heat is same. अभी बोलो. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ पहले. पहला है HKA. ठीक है. What do you think? What do online people think? and then Huh? So the first one will conduct more Why? faster. Because The molecules are less, so the conduction will be done faster. ये बात भी सही है. The molecules itself are lesser, no? yeah, so the conduction will be faster in the process. Yeah. ये Because बात for तो the सही है. solid for one molecule to like conduct it. I have never thought about this. This is an interesting counter argument. The answer is that heat conduction, the H is heat conduction. Okay. I mean, how much conduction is happening? Okay. Look up, H is heat conduction. Heat conduction. It is how much heat is transferred. How much heat is transferred per unit time. Per unit time. Heat transfer is like current. अच्छा, current के logically देखोगे, heat transfer is like current.
करंट ज्यादा कब होता है? जब एरिया कम होता है कि एरिया ज्यादा होता है क्रॉस So सेक्शन? I is equal to any VD, so it will be more, current will be more than area. करंट इज मोर व्हेन एरिया इज मोर। क्यों? वो तो इक्वेशन तो बोला, फिजिक्स से क्या आंसर है, क्यों ऐसा ज्यादा होता है? मतलब मैकेनिज्म तुम ये So the resistance is less हाँ in मतलब thicker wires. वो तो इनडायरेक्टली वही बोला, मतलब रेजिस्टेंस लेस है। मैं मैकेनिज्म वाइज पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, लाइक व्हाट इज द बेसिक रीजन, ऐसा क्या हो रहा है? So in the narrower wire, the collision will be more. Okay, so when there are more, when there's more area, when more particles per unit space. Then more when, energy. like when more particles move through one place, then current increases, right? Current increases, which is also she said, she's saying in a narrower pipe there are more collisions. She's saying in a narrower, मतलब she's saying narrower में क्यों resistance ज्यादा है, ये बोल रही है, right? Now can you extend this logic to the heat? Heat transfer is also energy transfer of molecules, right? So because there's a narrower path and the kinetic energy of the molecules is higher, they'll collide more, take more time. Yeah. I mean, what would you rather have? A narrower highway or a wider highway for going traffic? Wider highway, right? Okay. It'll be more organized in the wider pipe. ठीक है, so therefore yes, so this h, अच्छा h को ये भी लिख लो, it is dq by dt और q by t. q is the heat, ठीक है, and t is the time, so dq by dt or q by t. okay, What is Q? E. pardon, yeah, sorry, yeah, तो dq by dt, Oh, ठीक है, हाँ, हाँ, बट h जो है ना, इसको तुम सोचना वैसे ही I के जैसे, It's the same form. q is heat और वहां पे वो क्या होता है, Charge. चार्ज होता है, ठीक है। सो हीट कंडक्शन और हीट करंट भी बोलते हैं इसको, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हीट करंट मान के चलो, ऐसे बोलो हीट करंट है ये, ठीक है, अंडरस्टूड, दिस इज हीट कंडक्शन। अच्छा, करंट जो यहाँ पे वायर में करंट क्यों फ्लो रहा होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लोइंग करंट? Movement of charges. हाँ, वो तो you are saying कि current is movement of charge. I'm saying why is current happening? Why is, it moves from higher potential to yeah, because there is higher potential. तो अगर if I remove potential, current will go, right? So current का reason क्या है? Due to the Difference in voltage, right? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, this is the reason is equal to, reason मतलब V is equal to IR में reason is equal to effect into R. Do you understand? I is the effect, bro. I is the effect, no? And this is the reason. right? The effect is the outcome. Outcome, yes, output. Effect is the output. Okay. Same way इधर पे क्या है? What is the reason? You think and tell me what would happen? क्या नहीं होगा तो H नहीं होगा, heat current नहीं होगा. What part if you remove? Q. If you remove the heat supply, The heat supply. the difference in the Because of difference in temperature, that is the reason. ठीक है, देखो यहाँ पे ये cold है, अभी भी cold है रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ पे hot है रॉड, इसीलिए हीट कंडक्शन हो रहा है. If you remove this heat temperature difference, then conduction will stop. There is no conduction. In fact, अगर एक रॉड है उसमें दोनों साइड हॉट है, दोनों साइड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, हीट कंडक्शन नहीं होगा, राइट? हीट कंडक्शन ओनली अकर्स ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर. सो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा टी, यहाँ पे क्या था, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वाज IR, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा, व्हाट इज द रीजन, Difference in temperature. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू करंट, यहाँ पे करंट क्या है, H, which is dq by dt, we'll write it later, into some R of the rod. Okay, R of the rod, this resistance of the rod. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब ये बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड में, रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड जब लिखोगे तो इसमें एक एक्सप्रेशन आएगा, इसमें एरिया कहाँ होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा? एरिया इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड जो है नीचे है, वेरी गुड.
हाँ, और अगर रॉड का जो मटेरियल है उसका कंडक्टिविटी को के बोलते हैं, के इज कंडक्टिविटी, ठीक है। तो के ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा। नीचे होगा, वेरी गुड, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, और लेंथ ऑफ द रॉड कहाँ होगा? ऊपर होगा, बस हो गया, हो गया। दो इक्वेशन, एक इक्वेशन याद रखनी है, एक इक्वेशन याद रखनी है, और एक ये कि एच क्या होता है, डीक्यू बाई डी होता है एक्चुअली, ठीक। बस एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन दो, बस दो याद रखो, हो गया। डेल्टा टी इज एच इंटू आर, ठीक, अंडरस्टूड। डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस इज हीट करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड एंड रेजिस्टेंस इज एल बाई के ए, वेरी सिंपल, ठीक। हो गया, कंडक्शन इज डन। अब इसके प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक। फिंगर टिप्स खोलो, फिंगर टिप्स में ठीक है, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर आज करेंगे 43, फिंगर टिप्स के 43, 45, 46 करेंगे, 47 करेंगे, 48 करेंगे, 49 करेंगे, ठीक है। इस पेज पे दिख रहे हैं 49, पेज नंबर 133 ऑफ द 132 ऑफ द पीडीएफ है, पेज नंबर 132 ऑफ द फिंगर टिप्स पीडीएफ, ओके। सो you read 43, Watson. Yes, sir. 1 second. ठीक है, So what the question is, yeah, 43, this question. one end of a 0.25 meter long. One end of a 0.25 meter long metal bar is in steam, and the other end is in contact with ice. If 2 grams of ice melts per minute, then the thermal conductivity of the metal is given, like cross section of the bar is equals to 5 to 10 to the power minus 4 meter square, and latent heat of ice is 80 calories gram. अभी फिर से बोलो धीमे धीमे, I am not written note Yeah. slowly. So like one end of the metal bar is in steam, that's Steam. 0.25 metal bar. One second. Steam Steam, okay. Other end is at with ice. ice, ठीक. If 2 grams of ice melts per minute, 2 gram of ice melts per minute, right? yeah, Melts per minute, हाँ. फिर then the thermal conductivity of the metal is, और अभी तक मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो मिस नहीं करी है? the given cross section also is bar is 5 to 10 to the power minus 4 meter square. -4 मीटर स्क्वायर, हाँ. Yeah. और कुछ And latent heat of ice is 80 calories gram. कैलोरी पर ग्राम. और क्या पूछा उन्होंने? They are asking us the thermal conductivity of the metal. यानी के पूछा, के इज व्हाट, Yeah, ओके. K. लिखो इसको, फॉर्मूला बोलो क्या क्या है? R is equal to L A by K. नहीं, Oh yeah, L by K. R is equal to Delta, L by K A, और दूसरा delta T is equal to H into R. H into R, वेरी गुड. अब क्या करेंगे? डेल्टा टी, एक लेटेंट हीट बताता हूँ. लेटेंट हीट क्या है? अब देखो, आइस का मेल्टिंग, आइस 2 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स पर मिनट. 2 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स इन कितना सेकेंड? 60 सेकेंड. 60. 1 ग्राम मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? 80 calories per 80 कैलोरी पर ग्राम. 2 ग्राम मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए? 160 कैलोरी by 60 second, right? This is the heat which is being transferred, but this is the heat which is transferred per second, right? समझ में आया नहीं? Yeah. अच्छा, अब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये होता है, बताया अभी पहले, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ठीक. तो यहाँ पे लिखो इसको, ये दो ये काट दो, फिर बोलो 16 into 4.2 जूल by 6
per second. Do you understand what is this? अब ये बताओ ये चीज क्या है अपने इक्वेशन में? The H. This is h. H. h मिल गया, ठीक. डेल्टा टी कितना होगा? एक साइड. Will it be It's- 1? हाँ. Well, I asked, will it be 1? No, steam is कितना? No, 100. delta T will be 1, right? No, delta T is temperature difference of the rod at the ends of the rod. So what is temperature difference? One side is ice, Oh. one side is steam. So I thought it was time. I don't know. so how much is it? Arya, So it will be 100. 100 is equal to h का वैल्यू दिया है 16 into 4.2 by 6 और r यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है. Shreya, you understood this much? Okay, and then from r you will get, and r is itself equal to L by KA. अब इसमें लेंथ ऑफ द रॉड दिया है क्या? लेंथ ऑफ द रॉड इज 0.25. बस के पूछा है, ए दिया है, बस डाल दो. तो 100 into 6 by 16 into 4.2 is equal to L by KA. L डाल के डालेंगे, K is equal to L is 0.25 divided by area is 5 into 10 power minus 4 into 16 into 4.2 divided by 100 into 6. 100 निकाल लो, करो 100 into 10 power minus 2. 16 1 by 4 4, ये 4 हो गया. 4 into 4.2 by 30 into 10 power minus 2. 36.3. 4 into 4.2 divided by 0.3. 3 ones are 14. 14 ones are 14. 56. K is equal to 56. ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. कितना अच्छे से तो आंसर निकाला है. तो thermal steam and then is contact with ice. 2 gram of ice melts per minute. Thermal conductivity. क्या गलत किया है? कुछ गलत किया है क्या? नहीं तो 100. Oh, the answer is not in joule, it is in calorie. We don't need to convert. We don't need to convert this to Divided by 4.2. Yeah, you can divide your answer by 4.2, you'll get 14 4 14 3 14 3 4 by 3 40 by 3. कितना आंसर है? जूल. 1 calorie is 4.2 joule. तो मेरे 1 joule is 13.3. 1 by 4. That's not an option either. I got 13.3. I 2 grams of 2 grams per minute बोला है ना? Per minute. 2 grams per minute. 2 into 8 160 by calorie और per second you have to convert. That means minute. वो तो correct है. Per meter per degree Celsius. 0.25. Please do it again. Do it again. I will see what is the issue. 43. 13.1 or something. 13.3. But that's not an option. Do it again. Do it again. 40. हाँ मीटर में ही रखना है. उन्होंने क्या किया? 9 x is 60 second 80 कैलोरी क्यू को लिखा ना 12 into 80 किलो. 12 ग्राम है कि 2 ग्राम है? 12 gram. हाँ 12 gram. 12 It says 2 gram. 12 है कि 2 है? In R is 12, R is 2. And what are your Oh. options? 20, अच्छा, 40, अच्छा. 10. Same here also. ओके I think ओके. it's 12 only. हाँ वो मिस प्रिंटिंग है. आंसर में उन्होंने 12 लिख रखा है, 12 ग्राम दे रखा है. तो 12 ग्राम करोगे तो हाँ 12 into 80 होगा. It was 6, 13.3 into 6. No, 1. Yeah. Yeah. 12 into 80 by 60. Yeah, yeah.
80. Yeah, or only answer is 80 आंसर है, ठीक है। All log of all. ठीक, See, okay, X. बस बस आ गया सबको। Okay, next is 45. Two bars of same length and same cross section area but different thermal conductivities K1 and K2 are joined end to end. One end of the compound bar, देखो compound bar के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक end T1 है, एक end T2 है, ठीक है। The one end of the compound temperature T1 और T2 the temperature of the junction is, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, read it again, 45 क्वेश्चन, read it 2 times. कर लिया? अब ये लिख लो, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें टेम्परेचर क्या होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, करंट मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज होता है, वोल्टेज है ना टेम्परेचर, ठीक। और जो हीट करंट है वो क्या है, वो आई है, करंट आई ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आई। और जो यहाँ पे जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो वहां पे Normal electrical. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, यही है ना, ठीक। और यहाँ पे याद रखना थर्मल कंडक्टेंस में L बाई के ए है इसका, इसका जो वैल्यू है, ये सर नो, ठीक। अब क्या करना है तुमको, सिंपल जो भी थर्मल कंडक्शन का क्वेश्चन आई एस से, ये सीरीज में देखो, इसको ऐसे करना है, ये जो पहले दो, एक बार को एक रेजिस्टेंस मान लेना है और दूसरे बार को दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है। अब देखो ब्लैक में जो लिख रहा हूँ वो ये जो ब्लैक में डायग्राम बना रहा हूँ ये पूरा इलेक्ट्रिकल पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना है, T1 या V1 बोल लो, T1, ठीक। और यहाँ पे T2 और ये यहाँ पे T0 पूछ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, फॉर द फर्स्ट कंडक्टर R1 इफ यू राइट द ओम्स लॉ व्हाट विल यू राइट? Or T1 is equal to IR1. T0 minus T1. T1 minus T0 is equal to into I Is equal to IR1 ना, IR. the voltage difference is equal to current into resistance, understood? और दूसरे के लिए क्या लिखोगे, मैं इस पूरा इलेक्ट्रिकल उसमें लिख रहा हूँ, सॉरी मैं टेम्परेचर लिए लिख रहा हूँ, बट T0 minus T2 is equal T0 minus T2 is equal to to IR. I into ये I और ये I सेम है क्या? It's in series, sir. तो Yeah, it is सेम, same. यही लॉजिक है, इस सीरीज में इसलिए Same. सेम है, ऐसे हमेशा सेम नहीं होते। तो लॉजिक लिख लो, दिस आर सेम बिकॉज दे आर इन सीरीज, these two resistance and series, so series, so same, ठीक। अब क्या करना है, क्या पूछा उन्होंने, T0 पूछा है ना, T0. दोनों साइड से I इक्वेट कर दो, पहला वाले से इक्वेशन आएगा T1 माइनस T0 बाई R1 इज इक्वल टू T0 माइनस T2 बाई R2, और R1 है खुद कितना, R का फॉर्मूला क्या होता है, L बाई के ए, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, T1 माइनस, तो इसको लिखोगे T1 माइनस T0 बाई R होता है लेंथ ऑफ द रॉड बाई के ए। उन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों का लेंथ और एरिया शायद सेम है, Yeah, yeah, length and area is same. टू बार्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस एरिया, यानी कि इसके लिए जब L लिखोगे तो L होगा L बाई के ए ना, तो K1 इंटू ए इज इक्वल टू, जब राइट साइड वाले लिखोगे तो भी उसमें नीचे तो L ही आएगा, बस यहाँ पे K2 इंटू ए फिर से वही आएगा, अंडरस्टूड और नॉट? आर यू हैविंग कंफ्यूजन और नॉट? नो? आर्या? I understood, sir. ठीक, दोनों साइड से सब काट दो जो कट रहा है, और T0 निकालेंगे तो T1 माइनस T0 into K1 is equal to T0 minus T2 into K2, and you will isolate T0, so you will get T1 K1 plus T2 K2 is equal to T0 times K1 plus K2, so you'll get T0 is equal to T1 K1 plus T2 K2 by K1 plus K2, okay?
ओके फाइन, ये आंसर है इसका. यू Yes. आर नाउ टू डू. हाँ, अभी अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या बोलोगे? आर इक्विवेलेंट इज R1 plus R2. अगर मैं वही पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है अगर इस जगह पे एक रेजिस्टेंस होता तो उसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना होता? R1 plus R2. तो अब इसको डाल दो. R1 कितना होता है? L by K1A प्लस R2 कितना होता है? L by K2A. और R इक्विवेलेंट कितना होता है? You can equate to R. So it will be K1 K2 there. इसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का लेंथ कितना होगा? So you don't need that. Not equivalent length, right? If there are two rods, right, and then you are going to replace them with one rod, what should be the length of that rod? 12. 2L ना, तो यहाँ पे 2L आएगा ना, by K equivalent into A. यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट है. 46 का बी आंसर होना चाहिए, वो चेक कर लेता हूँ मैं. Right. अरे इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस में? जैसे सपोज यहाँ पे एक हीटेड, यहाँ पे एक बर्निंग फ्लेम है, ठीक है, यहाँ पे एक कुछ तो कोल्ड आइस है, या नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक. एक तुमने दो रॉड लगाई है, एक रॉड ये, एक रॉड ये दोनों रॉड क्या करें? हीट कंडक्ट कर रही है, ठीक. अब बोला है इक्विवेलेंट रॉड, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, मतलब इन दोनों की जगह एक रॉड लगानी है. इन दोनों को हटा दो, एक रॉड लगा दो, तो उस रॉड का लेंथ कितना होना चाहिए? 2L. उसका उसका कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट है, तो ये लिखोगे तो आंसर बी आएगा. ओके, चलो 47 बता दो. Is it a consider a composite Wait, slab? sir. Yeah, consider Wait. composite slab. See, R equivalent is R1 plus R2. Yeah, So L by R2, L by. So you get the full drawing. Oh, but conductivity is different. How can you just put that by here? Papa. It should be L by K1A plus L by K2. Oh, you are saying, sir, it should be not be, it should be just L by K equivalent A, right? Is equal to L by K1A plus L by K2A. Yeah. ये तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस से तुम्हारा लॉजिक आ रहा है ना. तुम बोलते हो कि सर एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, राइट, दोनों का यहाँ पे V1 है और यहाँ V2 है, राइट. V1 minus V2 is equal to I times of R1 plus R2 होता है ना. फिर तुम क्या करते हो, बोलते हो ओके अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं यहाँ पे, एक R इक्विवेलेंट, तो उसमें भी V1 और V2 अगर, तो उसमें सेम करंट होना चाहिए, राइट. दैट्स व्हाई यू से V1 minus V2 is equal to I times R equivalent also. Now equation 1 and equation 2, you combine them and then you say R equivalent is R1 plus R2. Okay. Now let's get down inside it. What is happening? ये रेजिस्टेंस क्या है? एक रेजिस्टेंस, एक मान लो एक मेटल बार है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल बाई, यही होता है ना. तो मान लो ये पहला वाला मेटल बार है जिसका कुछ रो 1 है, कुछ इसका लेंथ 1 है, और लेट्स से अभी एरिया सेम रखते हैं, ठीक है, और ए है, ठीक. और दूसरा वाला R2 भी क्या है? एक मटेरियल है जिसका रो 2 है और L2 है और A है. एरिया सेम रखा है मैंने, ठीक. अब अगर इधर मैंने तुम अग्री करते हो R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, इन दोनों की जगह आई विल टेक अ वन कंपाउंड बार, ओके, ऑफ सेम एरिया, ठीक. तो उसका रिलेशन क्या होना चाहिए? हम देखो लिखेंगे रो 1 R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, R1 इज रो L1 by A प्लस रो 2 L2 by A, राइट, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रो इक्विवेलेंट बोलता हूँ तो रो इक्विवेलेंट इनटू
L equivalent by A, right? ठीक, अब A गया, ठीक. Now see, this left side change नहीं हो रहा ना, rho 1 L1 plus rho 2 L2. Right side वाले में तुम क्या कर सकते हो, देखो, either you can use a double 2L, you can play with this, इसमें तुम खेल सकते हो, इसमें तुम ऐसे कम करो, कैसे, how should I explain? Yeah, I think I get, like, because there are two variables, you can play with those. We can play with those, no? Right? यहाँ पे also there are, यहाँ पे ऐसा है, see resistance में, in the heat conduction, there are two places from which the temperatures T1 and T2 heat is generated. You have to conduct atoms from here to here, no? So L becomes 2L. I mean, it has to be 2L. It has to be 2L. Okay. We can't play with L there. Either we can play with L. Because the distance between T1 and T2 is less. It matters. It matters, right? Okay. Fine. 47, 48 you will do as your homework. No, sir, I have done 47. Final answer B hai. B for ball. Sir, I have a doubt in this 47 part. हाँ. Do we assume the length of both of each of the slab to be the same? Two different materials having equal thickness and thermal conductivity. Consider composite slab considering of two different materials. Composite slab है ना? Yes, it is same. Composite means it's the model. हाँ, मतलब I mean one composite slab का एक ही cross section area होता है. Composite slab मतलब slab है ना वो. ऐसा तो नहीं थी. अगर composite slab है मतलब it is slab made of two different materials, right? But still it is slab. अगर slab नहीं होगा तो कैसा होगा? एक ऐसा एक slab ये, दूसरा slab का एरिया बड़ा होगा तो फिर slab नहीं बचा ना. समझ रहे हो? Right. ये slab नहीं बचा ना अब ये. It is not one full slab, no? It has to be continuous. Understood? So can you go a little on top of this? ये वाला कॉपी कर लो. तो आपने जो ये डायग्राम लिखा है, हाँ, फिर के लाइन बॉटम का गलत नहीं है. वो क्या है? वो तो मैंने टेम्परेचर ये नहीं, ये गलत, ये इसके लिए नहीं है. यहाँ पे L equivalent आएगा, which is 2L. Sir, what is the, like, in this chapter also R is resistance only, or does it have any other term? Sorry, one It's second. heat resistant. Term was the same, when you deal with conductivity, you are using resistance there. What was the same problem? So do we do 47, 48? एक मिनट. हाँ हाँ बोलिए. 49 बता दे रहा हूँ. 47 48 अपने घर पे करना, ठीक है? 49 देखो, पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन. Three metal rods of the same materials and identical in all aspects are joined as shown in the figure. The temperatures at the ends are maintained as indicated, assuming no loss of heat from the curved surfaces of the rod. The temperature at junction X would be. ये दोनों 90 है क्या? ठीक है, तो सब कुछ सेम है ना इनका. Yeah. सेम. तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि इस क्वेश्चन में बोलेंगे टेम्परेचर्स क्या होते हैं, वोल्टेज होते हैं. तीन रेजिस्टेंस बनाए, R, इसका रेजिस्टेंस R, यहाँ पे 0 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस भी R, यहाँ पे 90 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस भी R और यहाँ पे 90 वोल्ट. अब बोल रहे यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ये पूछ रहा है ना. हो गया. देखो वो यूज करो तुम अपना, क्या है कि जितना करंट, ऐसे सोच बोलो कि जितना हाँ KCL, यहाँ से करंट आई जा रहा है, इट ब्रांच, सपोज यहाँ से ये बंद करो, सपोज करंट इज गोइंग फ्रॉम हियर, ओके, I current, and I will branch to I1 and I2, right? So the equation is I is equal to I1 plus I2. Yes, the current which जितना current यहाँ से जा रहा है, it is, suppose you can choose any side, okay, doesn't matter. So it's coming from this I1 plus I2. Okay, understood?
हेलो, समझ में आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. What is the expression for I? Identical. I1 plus I2. हाँ वो ठीक है, I is I1 plus I2. Now what is I itself in this? You know, this temperature is 90, this temperature is V. Understood? You can write I is current, no? Current is voltage by R. So yeah. The arrow should be So one should be. 90 minus V. Very good, very good, very good. I is how much? बोलो बोलो, एक मिनट. 90 minus V by R. R, very good. And I1? I1 would be V minus 0. By R, very good. By And R. I2? 9, no, wait. Sorry, V minus 90 by R. Yes, very good. V minus 90 by R. पहले ये समझ में आया जो उसने बोला है? Sir, I have a doubt. एक मिनट, तुम्हारा डाउट पहले ये इतना बोले, समझ में आया कि नहीं? Yeah. We have assumed that the current starts from A and then A to B it goes and A to C it goes. We have assumed this. I am not saying this is the correct assumption. Okay, later on plus minus. Yeah, it will come as minus. If it is incorrect, you just do it. Okay. You don't have to assume correct things. No, assume का word मतलब ही होता है ना assume, है ना? Assume word में ही है ना assume, तो सही कैसे होगा वो? हो सकता है सही, हो सकता है गलत. इसको यहाँ तीनों को डाल दो इसमें और बता दो V कितना आ रहा है. आई जो फ्लोर 180 गलत है. तुमने न्यूमेरिकल मिस्टेक किया है सॉल्व करते टाइम. दैट इज 60. 90 से करंट आएगा 60, 30 के बराबर, और फिर 60 से हाँ 60 है. You find out current also, हाँ like the current. नहीं चाहिए. Hey, I think is V is equal to V minus 0 plus V minus minus 60. समझ में आया ना ये? अब एक काम करो. Sir, actually, व्हाट? तुमसे इक्वेशन 3 नहीं डाली जा रही है? no, I started in a different way. Like I assumed the different currents. what currents have you assumed? I1 on top, I2 bottom. भाई मैं यहाँ पे ABC लिखा हुआ है मैंने, अब तुम वैसे बोलो. Right side. Okay, so then ABC. Okay. A to junction as I1. हाँ ठीक है. B to junction, C to junction as I2. ठीक है. Junction to B as I1 plus I2. जंक्शन टू बी. Junction to B. ठीक है. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी, assumption तो सही है. इसके बाद तुमने पक्का So किया. I1 plus I2 into R is X. I1 plus I2 into R is X. एक मिनट. I1 plus I2 into R is X. X क्या होता है? V. अच्छा, इसको V बोला तो V minus 0, मतलब जो V is equal to I1 plus I2 into R. ठीक. नेक्स्ट. I1 R is equal to 90 minus V. So I1 R is equal to, ये भी सही है, ये भी सही है. I2 R is equal to again 90 minus V. सही है. अब तुमने जो न्यूमेरिकल मिस्टेक करी है, तुमने इक्वेशन सही No, लिखी. no, however, I got 2R into I1 plus I2. तीनों से R उठा के इक्वेट कर दो. Is the R of नहीं आ रहा है क्या उससे? एक मिनट. अच्छा, I1 equal to I2, do you understand? I mean, From the next these two equation, can you understand I1 is equal to I2? okay. तो ऊपर डाल दो V is equal to 2R 2IR. V is equal to 2IR, समझ में आया? I1 is equal to I2 is equal to IA. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वो यहाँ डालोगे 2I, तो ये आ जाएगा V is equal to 2R. Yeah. V equal to 2R यहाँ डाल दो. 90 minus 2R is equal to IR. Sorry, 2, एक मिनट. V is equal to 2IR. यहाँ से आया V equal to 2IR, नो? Yes. यहाँ डाल दो. 90 is equal to 3IR आया. Oh. IR, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं. हाँ, V is equal to 2IR. So 90 is equal to 3IR. ठीक.
तो 30 is equal to IR. And what is V? V is 2 IR. So V is 60. Yeah. ठीक है. Okay. Okay. You can also take C to be the highest potential, and then you can also say C से current ऐसे जा रहा है I1 and it is I2 and I3. You can do that. आएगा, उससे भी आएगा. The answer just come in negative. हाँ, आएगा. Doesn't matter. हाँ, आएगा आंसर. ठीक. ठीक. अभी do the same question. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? ये 0 था, ये 90 था और ये 90 था, राइट? ये था ना क्वेश्चन में. Do the same question, but this time change this 90 to 30 and now tell me the junction temperature. First predict the junction temperature. क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? पहले predict करो. Why did you change it to 30? हाँ, ये 90 को 30 पहले सॉल्व करने से पहले रुको, सॉल्व करने से पहले प्रेडिक्ट करो. डिक्रीज, दिस जंक्शन टेम्परेचर विल डिक्रीज. पहले 60 था, अभी Yeah, it will come down, like say. No, it can be the same, because if the left band, the left side is the same, they will both be deep. No, it doesn't matter. सोचो थोड़ा. 90 90 In trying to say you're changing 90 to 30, Yeah. if you're 90 and then 10 change and will be changed. पहले T60 था, हाँ. अभी बिना सॉल्व करके बताओ. So only the bottom one is 30, okay, so it will be the same. सेम. Hmm. I don't feel the same. So it will decrease. No? Decrease. So you're saying less than 60. Yeah. Okay. ठीक है, अब सॉल्व करके देखो. See if your assumption is correct or not. 90. How do you think? तुम अब करो ना, अपने करो ना सॉल्व. No, but thinking, how do you? अच्छा, thinking. Okay. It is basic. If I ask you the same question with currents and voltage, think in current and voltage terms. पहले 90 था तो इधर करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अभी 30 है, इधर भी करंट फ्लो होगा तो ज्यादा करंट आएगा. ज्यादा करंट आएगा तो वहां से भी ज्यादा आएगा, वहां से ज्यादा आएगा तो करंट ज्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, तो डिक्रीज होना चाहिए. यस, 60 था, अभी कम आ रहा होगा ना, 60 से 40 आ रहा है. हाँ, सबको 40 आ गया. Yeah. हाँ, ठीक है. Yeah, 40. देखो ऐसे अगर मैकेनिज्म समझना है, देखो ये दोनों इक्विपोटेंशियल, इधर देखो ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है ना. These two are equipotencial points, right? 90 90. और ये क्या है? 0. So of course current should flow in the general from right to left, right? And of course ये 90, ये भी 90, तो यहाँ से इक्वल करंट फ्लो होना चाहिए ना. Yeah. इसलिए I1 I2 बराबर आया था. ठीक, इक्वेशन से भी आया था ना बराबर. Yeah. और ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का सम यहाँ होना चाहिए, 2 twice इसका होना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ नीचे, यहाँ पे क्या हो रहा था कि दिस current was entering from this side, from this end and leaving like this, right? When you make it, instead of 90 you make it 30, current will enter from here, but this time it will leave from here and leave from here, right? Yes. Therefore पहले दोनों इनपुट दो थे, ये भी इनपुट था और ये भी इनपुट था, राइट? और आउटपुट यहाँ से था. अभी इनपुट बस यही वाला है और यहाँ से आउटपुट हो रहा है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है, तो इनपुट से ज्यादा करंट आना चाहिए ना. अगर ज्यादा करंट है तो IR वहां पे ज्यादा हो जाएगा, इस ब्रांच का IR ज्यादा हो जाएगा ना. Yeah. अगर IR ज्यादा हो गया तो वहां का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा. पहले पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? यहाँ पे 60 आ रहा था, 30 का पोटेंशियल ड्रॉप था ना. अब पोटेंशियल ड्रॉप 40. ज्यादा होना चाहिए, तो ये पोटेंशियल 50 का हो चुका है. ये तुम्हारा आंसर 40 आ रहा है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसमें? 50 का है. पहले पोटेंशियल ड्रॉप 30 का था. ठीक है, ओके. दिस इज कंडक्शन इज डन. ओके, you there are other questions, you solve them. और कोई क्वेश्चन नहीं है. कंडक्शन के बाद एक होता है छोटा सा कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में कोई इक्वेशन नहीं होती, सिर्फ इतना होता है कि क्या होता है कन्वेक्शन में? कन्वेक्शन इज व्हेन
heat conduction happens through fluids. देखो, convection is when heat transfer happens through fluids. Fluids means motion of fluids. Okay. So what happens in conduction is, conduction में पढ़ा है हमने molecules, नहीं conduction बोल, I am saying conduction. What happens in conduction is molecules remain at their place. They just transfer the energy from one place to another, right? एक adjacent को करेगा, उसके adjacent, फिर उसके adjacent करेगा, ऐसे करके. लेकिन convection में क्या होता है, पूरा पूरा molecule उठ के चला जाता है. For example, अगर ये water है, water tub है, tub में water है, water को you are heating. Okay, what will happen if you heat it? यहाँ से this molecule, this water will get heated up. This water get heated up, and if it gets heated up, it will expand. If it expands, the density decreases. Lighter density water will go up. So ये गर्म पानी ऊपर जाएगा. जब गर्म पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा पार्शियल वैक्यूम टाइप क्रिएट होगा. तो यहाँ कौन लेने आएगा इसकी जगह? बगल से ठंडा पानी. ठीक, ऐसे आएगा. अंडरस्टूड? तो ऐसे एक कन्वेक्शन करंट ऐसे क्रिएट होगी, तो गर्म पानी ऐसे होगा. ठीक है, समझ में आया ना? ये ऊपर जाएगा, फिर मतलब गर्म पानी जो है ना वो ऐसे, गर्म पानी का मोशन देखना ऐसे. पहले यहाँ था गर्म पानी, यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर क्योंकि यहाँ पे जगह ले, यहाँ फिर ऐसे ऐसे जाएगा. ठीक है, सो दिस इज लाइक अ बटरफ्लाई इफेक्ट. बटरफ्लाई ऐसे तो कोरियोलिस फोर्स ऐसे ही होते हैं. ठीक है, विंड्स इन द एटमॉस्फेयर आल्सो हैपन लाइक दिस. फाइन. So इसमें क्या हो रहा है कि the matter itself, the hot matter itself is moving from one place to another. Okay, ऐसा नहीं है कि the energy is transferred. Fine, convection understood. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही है लॉजिक. ठीक है, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बता देता हूँ. कन्वेक्शन में there's no question. 55 एक क्वेश्चन है, नॉट नेसेसरली यू शुड नो. 55 एंड 56 देखो, पढ़ो एक बार. नो, कोई नहीं, पढ़ो तो. इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोलर रीजन ऑफ द अर्थ. ग्राफ के बाद वाला क्वेश्चन होगा. The equatorial and polar regions of the Earth receive unequal solar heat. The convection current arising due to this is called. What should be the answer? What's the question number? 50. In my PDF, it is 55. 55. It is just after the graph. C होगा या फिर C होगा ना, ट्रेड विंड होगा ना. देखो लैंड ब्रिज सी ब्रिज तो वो नहीं होता. लैंड ब्रिज सी ब्रिज तो उसके पास होती है. हाँ, सी के पास होती है ना, या वाटर बॉडी के पास में होती है ना. टोरंटो ऐसी फालतू ऑप्शन है. ट्रेड विंड्स. So not in this question, but in general, land and sea breeze is also convection, right? Yeah, it is convection. ठीक है, so the answer is trade wind. And now you write, very important for exams, the next topic is Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. So what about radiation? Radiation इसके बाद है. Okay. Okay, what is Newton's law of cooling? Newton's law of cooling बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वो ये बोलता है
the time taken, suppose the room temperature is equal to, let's say, 20 degrees Celsius. Okay. I'll tell you the concept of Newton's law. Concept ये मतलब example of Newton's law कि the bucket has suppose water at 80 degrees Celsius. Okay, it's a hot water. It cools down to 70 degrees Celsius. Let's say in 2 minutes. Okay. So it is going from 80 to 70 in 2 minutes. So it will go from 70 to 60. No, lesser time. Because The molecule- difference is less. yeah. I The don't molecules are understand. already, Which is difference? It's the same. No, like. it'll be less because the So molecules. the time taken will be more. Will be more or less? More. More. Acha, why it is Sorry, more time. एक Or बात take more time to- I don't know. So because like initially the temperature difference is 80 and. अच्छा देखो अभी इस पानी का टेम्परेचर कितना है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, एनवायरमेंट टेम्परेचर कभी चेंज नहीं हो रहा है, ये assumption है, ये तो होता ही है। ये 80 से 20 मतलब ये कम क्यों हो रहा है टेम्परेचर, इसका रीजन क्या है? Because So heat transfer to the environment. हीट ट्रांसफर थ्रू द, क्या हो रहा है, इट इज ट्राइंग टू रीच द रूम टेम्परेचर। वेरी गुड। कैसे हो रहा है ये काम? इवेपोरेशन मत बोलो, बंद होगा तब भी होगा ना ठंडा। अगर बकेट में बाल्टी ठंडा वो लगा दूं ढक्कन तब भी होगा ना ठंडा, तो इवेपोरेशन मत बोलो, हीट लॉस हो रहा है। So it releases heat. इट रिलीजेस हीट ना, कैसे रिलीज हीट कर रहा है, कैसे हीट रिलीज कर रहा है? ये हीट रिलीज तो इंग्लिश वर्ड है ना, फिजिक्स बताओ कैसे हो रहा है? So there's a temperature difference. So वन सेकेंड, तुम पहले बोलो, फिर तुम there's a temperature difference. हो क्या रहा है, अंदर क्या हो रहा है? Yes, sir. So then there's. Heat transfer, heat energy, these are in 1 second. The molecule and the liquid interact with the water. Yes, I-
Sir, you're on mute. Sir, you're on mute. Yeah, sorry, so you haven't Yeah. heard Newton's law of cooling? No. Oh, so Varun, a gray shirt, you tell me what we have we discussed. Great. Yeah. Okay. So Newton's law of cooling is when what is the tendency of a high temperature weaker to like cool down itself to room temperature? So when 80 degrees, let's say the room temperature is 20 degrees, 80 degrees Celsius weaker will have while cooling down from 80 to 70, let's say the time taken is 2 minutes. Now for this 70 degrees to further cool down to 60 degrees, it will take more than 2 minutes because the tendency of 80 degrees Celsius, because initially when 80 degrees Celsius interact with the 20 degrees Celsius, the heat difference is lot. So then the tendency will be a lot to give away heat. But now when 70 degrees is interacting with 20 degrees, the difference is less. So the tendency to give away heat is less. So that's why the time taken is more. Good explanation. Did you understand? Okay. The time taken to cool from 80 to 70 is lesser than the time taken to cool from 70 to 60. Okay. Higher the temperature, higher if the hotter the water is, faster it cool downs, basically. Okay. ठीक है ना? Okay. Pardon? Convection भी नहीं सुना. Convection, did you hear convection? The candle was नहीं, उससे पहले कॉल आया था. नहीं क्या? Convection. For the time and all, someone was telling me. When we discussed. Hey, did you hear convection, 11th graders? Yeah. Yeah. Okay, I have a question. So there is a person, okay? There is this person who is supposed to go now. वो बाद में बताता हूँ अभी नहीं बताया. एक क्वेश्चन पर लिखो. There is this person, okay? He is working from home, WFH. Okay. He is working from home. He is enjoying the perks of doing WFH. Okay. Then he can, the good point is that he can even bathe during office hours. Just take a laptop, and go to the washroom and bathe. So he has a bathtub, okay? What he does is, he starts filling his bathtub with hot water, okay? Hot water. Take. Otherwise, how will you? It's important to my story. Yeah. Now the thing is, he fills it up with hot water half. What does he do is, hot water से fill करता है, गीजर से निकल के, फिर जैसे आधा भर जाता है, फिर इसको ये कोल्ड वाटर चला देता है और भर देता है, ठीक, और फिर नहाता है. वो पूरा हॉट वाटर में नहीं नहाएगा, है ना? ठीक है. सो दिस इज हॉट वाटर एंड देन व्हाट ही डज इज कोल्ड वाटर. ठीक है. अभी ना वो नहाने जा रहा है मस्त एकदम, और हॉट वाटर से भर दिया उसने बाथटब. ठीक है अपना. ही वाज जस्ट अबाउट टू टर्न ऑन द कोल्ड वाटर. उसका एक ऑफिस कॉल आ गया, इंपॉर्टेंट, and its office call is of 20 minutes necessarily. He has to take it. Okay. अब मुझे उसके पास दो ऑप्शन है. एक क्वेश्चन तो सुनो. क्वेश्चन सुनो. Should he mix up to the brim and then go to take the call, or he should come back and mix cold water later? एक मिनट. No. Assume नहीं है, ये नहीं है हॉट वाटर, अब नहीं है. क्वेश्चन सुनो. आधा भर गया, हॉट वाटर भर गया है, हॉट वाटर खत्म हो गया. अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि वो उसको कॉल लेने जाना है 20 मिनट का, और 20 मिनट के बाद ही नहाना है. उसको अभी मिला के चले जाना चाहिए हॉट कोल्ड वाटर, या आके मिलाना चाहिए? क्योंकि So you should mix it first. No, अभी मिलाना चाहिए because it will have no, yeah, it will take a longer time to cool down more. Yes. Whereas the hot water will take out
lesser temperature. अगर वो 80 डिग्री सेल्सियस वाटर को छोड़ के चला जाए, हॉट वाटर को, है ना, तो 80 डिग्री बहुत जल्दी कूल हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर वो मिक्सअप करके जाए, मिक्सअप करके मान लो वो 60 हो जाता है, क्या? हाँ, हॉट वाटर विल कूल डाउन फास्टर. Cool down faster, but it takes more time to come to the same temperature as a cooler water. एक बात बता, 80 to 20 will take more time than 60 to 80. देखो 20 तक तो कोई नहीं पहुंच रहा है 20 मिनट में. Okay, I'm giving an example. नहीं, that is important to my discussion. Fine. It is not going to reach 20 in 20 minutes. Otherwise, it doesn't make a difference whether if it reaches 20, then whether you mix it later or mix it now, it doesn't matter. You will bet with 20. Right. Understood? So my entire discussion is based on the assumption it does not reach room temperature. Okay. Now, if that holds true, then you should mix it first. Okay. Understood the concept or not? नहीं. So for मैं एक बात 20 बता. minutes, 80 can come back to we say mix it first. देखो, see what will happen. I'll tell you. अगर 80 को 20 मिनट छोड़ दिया, हाँ, ठीक है, 80 को 20 मिनट छोड़ दिया, will come back तो to ना वो 71 60 हो जाता है, ठीक है, ठीक, 60 हो गया, 1 मिनट, 20 minutes, sir. ठीक, ठीक है, 60 हो जाता है. अब 60 वाटर इतना हाफ लीटर वाटर, सपोज ये हॉट वाटर 1 लीटर और कोल्ड वाटर 1 लीटर होता है, ठीक है, तो 1 लीटर 60 में 1 लीटर 20 मिलाओगे, कितना आएगा फाइनल टेम्परेचर? 50. 1 लीटर 60 में 1 लीटर 20 मिलाओगे, 1 liter 60, 1 liter 20. हाँ, 40. 40 आएगा ना, तो फाइनल यू आर बेथिंग विद 40 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड? यू आर बेथिंग विद 2 liters वाटर ऑफ 40 डिग्री. अब अगर तुम इसको मिला के जाओगे, सपोज मिला दोगे 80 और 20, Then you get to 60. व्हाट इज द एवरेज ऑफ 80 and 20? 1 लीटर 80 प्लस 1 लीटर 20, कितना एवरेज है? 50, no? 50 है ना? Yeah, 80 20 का एवरेज 50 होता है. Yeah. हाँ, 50 है. So you'll get 50 liter, but 50 degree Celsius or 2 liter, but it'll cool down, no, for 20 minutes. And I'm saying that cool down temperature should be more than 40. That will be for like 42, 43, 45. Okay. Yeah. If you do it with temperatures, it is difficult to understand. Wait, If you sir, think in terms of heat lost, but heat sir, lost. So I have a doubt. So you're saying if so case one is when you attend your call, the water is at 60 degrees Celsius. What the hot water you bring? What cools to 60? 60 degrees Celsius, but only 1 liter. 1 liter, yes. Now you mix it 1 liter more. You'll get 2 liter 40 degrees Celsius. 2 liter 40 degrees. Yes. Yeah, which is further cool down 20 minutes. No, it will. यही है. This is a way. Oh, right. कूलिंग हो गई ना. Yeah, okay. इसमें Now- तुमने तुरंत मिला दिया. Yeah. Then you add one. You have to add cold water. 80 से जैसे ही मिक्स किया, and this is mixing, right? और यहाँ पे पहले मिक्स किया, तो मिक्स करते ही इंस्टेंटली कितना हो गया? 50 हो गया, right? Right. This is 2 liters. समझ में आ रहा है? And then you cool it. I'm saying this will cool down to less than, मतलब 40 से ऊपर रहेगा. Because the quantity is more. Cooling will be slower. So the temperature. Sir, but still, it is constant, like it depends on. You can ask. Okay, let me. Now you can ask another question. Ki, sir, why are you saying it is more than 42? More than 40? Right? Why, sir? Maybe it is 39 now. Yeah, I mean, that's what I thought. Yeah. So I can also control. I have an argument for you. You should not. You can do this calculation. You will get that it is 42. But I mean, for more than 40 for sure. You can do it. Okay. I can convince you by another argument. Don't think in terms of temperature. Think about heat lost. Okay. Everything else remaining same. If more heat is there, more temperature is there. Everything. अगर volume same है, सब same है, तो heat जितना ज़्यादा है, उतना temperature ज़्यादा है. ठीक. Now you tell me which substance loses more heat. See, you should understand. ये जो ऊपर वाला 1 liter है, ये तो heat lose नहीं कर रहा ना. Okay. So सुन ले मेरी बात. Okay. ये heat lose नहीं कर रहा ना. इसका heat तो उतना ही है हमेशा. Why? अरे 1 liter तो cool नहीं हो रहा ना. भले ही whatever process you take. Okay, yeah. ये तो room temperature पे ही है, which you are mixing. Think about this 1 liter of hot water. In which case it is losing heat more.
more heat. The case like don't add cold water. Yeah. Right. So if heat is lost more, and finally everything else is same, should have a lower temperature. Okay. You do it numerically, you do it, Yeah. okay? You will get it. Okay, sir, I have, Hmm. so you have, okay, Hmm. two containers, Hmm. same volume, Hmm. okay, Hmm. but T1, okay, so let's say T2 is greater than T1. Hmm. T2 is greater than T1. Hmm. Now it's getting, now which one, so T, the second container will take more time to come to T0. T0. Which is really temperature. T2 is more, no? Yeah. Yeah, of course. I mean, बाहर का टेम्परेचर T0 है, ठीक है. अच्छा ऐसे बोलते हैं ये 80 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस है. बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक. दोनों अगर 70 पे आना है दोनों को कौन सा ज्यादा टाइम लेगा? 100 डिग्री. T2 ज्यादा लेगा, वो तो मतलब जर्नी ज्यादा है ना उसकी. लेकिन अगर 10 कम करना है दोनों में, कौन सा? Then 100 will become faster. हाँ, so 80 will take more time. Yeah. So now I've got it. You got it. Understand? Now if we go back to our work from home game, now I don't care if I does 50 degree. I mean the time both them are given is the same. Yes. No, but 80 to 60 is fast because it's from 80 to no, I don't know. Okay. The cooling state, okay, 60 to 40 is the up it's not because of that. ठीक है. Okay, light radiation. Right radiation. So What? if it was like 2 liters of like 80-degree water and 1 liter of say like 60 or 40, which one will cool down faster? फिर से बोलो. If there was 2-liter water Hmm. and the temperature is like 80, Hmm. and if there's like 1 liter water and the temperature is like 60 or 40, 60 or 40, or I mean, what are you saying? Second case, like either 60 or 40, okay, let's take 60, which will cool down faster. which will cool down to what? Like when you say cool down, are you telling me a final To temperature? room temperature. Huh? To room temperature. Oh. Your question is दोनों को 20 पे जाना है ना? Yeah. The quantities don't matter. 80 degrees Celsius will take more time. So it doesn't depend on the volume. No. Okay. Yeah, no. No. Assuming there is enough conduction, I mean, see, if you take a very small amount of water, it will cool down faster. Then bulk, मतलब bulk वाला effect नहीं आना चाहिए. A water which wants to cool down at the center can get cooled down, then this is true. Okay. Understood. Insulation type नहीं होना चाहिए कि ये वाला insulate कर रहा है इसको और it is not cooling down. Okay. Assumption है कि if anything wants to lose heat, it will मतलब there should be no obstruction for it to lose heat. Okay. Then this is true. The high temperature will always take more time to go to the final temperature. Okay. Irrespective of mass. Yeah. Okay. Fine. अच्छा इसमें Newton's law of cooling में there was one formula which we missed. Say, listen. तुम लोग को निकलना है. The thing which we missed was Newton's law of cooling. देखो इधर. I think that is a question in NCERT. So maybe you'll have to open NCERT delta T by delta T. ये वाला लिखो हाँ delta T by delta T ये लिखो हाँ लिखो. The cooling is proportional to लिखो. Cooling is proportional to T average minus T surrounding. So this is in radiation. नहीं ये radiation में नहीं, Newton's law of cooling है, ठीक है? Okay. Cooling is proportional to average temperature minus surrounding temperature, ठीक है? तो एक काम करिए आप क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए जोर से. A pan filled with hot food cools from 94 to 86. ये क्वेश्चन है. So question number what? 44. A pan cools from 94 to 86. बोलो जोर से.
A fan filled with hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. In 2 minutes, ठीक है. When room temperature is at 20 degrees So Celsius. RT दे रहा है 20, ठीक है. हाँ. The time taken to cool it from 71 to 69 is 71 to 69 in what time, right? इसको दो कैसे करते हैं. पहले केस में कूलिंग कहां से कहां हुई है? 86. कितने टाइम में हुई है? 2 minutes. अच्छा, तो यहाँ पे इसको लिखो रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग. ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है. रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग. रेट ऑफ कूलिंग कहां से कहां हुई है? रेट ऑफ कूलिंग कूलिंग कहां से? 94 से 86. कितनी कूलिंग हुई है? 8 डिग्री. कितने टाइम में? 2 मिनट. तो रेट ऑफ कूलिंग कितनी होगी? व्हाट इज रेट ऑफ कूलिंग? 8/2. अरे मिनट छोड़ो, मतलब छोड़ दो तुम. मिनट मेरा आंसर निकाल. ये समझ में आया? ये रेट ऑफ कूलिंग समझ में आया? 8/2. कितनी कूलिंग हुई है? 8 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट. इट इज प्रोपोर्शनल टू टी एवरेज. एवरेज होता है इन दोनों का एवरेज. कितना एवरेज है? 90 माइनस टी सराउंडिंग कितना है? 20. सराउंडिंग मतलब रूम टेम्परेचर. समझ में आया कि नहीं? आ गया. अच्छा, बाद में सेकंड केस में कूलिंग कितनी हुई है? 2 डिग्री हुई है. कितने टाइम में हुई है? नहीं पता. नहीं पता. क्वेश्चन मार्क. इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर? एवरेज टेम्परेचर कितना है? 70 माइनस सराउंडिंग 20. समझ में आया? दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा. पहले का 4 इज प्रोपोर्शनल टू 70. इसमें आएगा 2 बाई क्वेश्चन मार्क इज प्रोपोर्शनल टू 50. तो डिवाइड कर दो. 4 डिवाइड बाई 2 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 70 बाई 50. Divide these two equations and So then get A is equal to 15, like in the initial one, like there is. you can also write 8/2 is k times 90 minus 20 and 2 by question mark is k times of 70. You can write in these terms. 0.7 क्या? हाँ, ठीक है. Very good. 40 second है. ठीक है, quite average. ओके, लिखो रेडिएशन. चलो बस. ओके, स्टीफेंस लॉ. लाइक रेडिएशन. रेडिएशन होता है, देखो रेडिएशन होता है. हीट कैन आई सो अभी कंडक्शन कन्वेक्शन में हीट वाज ट्रांसफरिंग थ्रू either molecules. Either it was the vibration of molecules or the molecules itself were getting transferred one place to another. Radiation does not happen through medium. Radiation के लिए medium नहीं चाहिए. Radiation happens through electromagnetic waves. देखो, heat radiation is heat transfer through electromagnetic waves. Heat radiation is heat transfer through electromagnetic waves. Okay, comma, no medium is needed. Just like EMW transfer. EMW transfer तुम लोग पढ़ चुके हो ना 12th के बच्चों. EMW के लिए नहीं चाहिए medium. Heat transfer radiation के लिए भी नहीं चाहिए. Heat transfer from sun to earth happens through radiation. Very good. Heat transfer from sun to earth transfer happens through radiation. ठीक है, कुछ और स्टेटमेंट्स लिखो. Every body which is at greater than 0 Kelvin, every body which is at T greater than 0 Kelvin radiates heat. Every body which is at T greater than 0 Kelvin radiates heat. फिर लिखो क्वेश्चन, is Adi radiating heat?
Yes. Is bottle radiating heat? True. Yes. 0 Kelvin. T greater than 0 Kelvin. Yes. It's like everything. 1 second. Hello. Even I. One second. Like next, right? Everybody which is T greater than 0 Kelvin absorbs heat. Everybody which is at T greater than 0 Kelvin absorbs heat as well. Okay. Fine. So how can a body absorb and radiate heat at the same time? Okay, next I बता रहा हूँ. Next देखो. If the temperature of the body of a body is constant, if the temperature of a body is constant, that means it is Radiating and absorbing at the same rate. yes, radiating and absorbing at the same rate. Okay. Okay. Fine. अच्छा अब ये बताओ सोचो थोड़ा देर ये पेन जो है पेन इज इट प्रोड्यूसिंग हीट Yeah. इज इट प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस हीट कौन करता है जैसे फायर Light. या मोबाइल में भी प्रोड्यूस हीट हो रही बिकॉज इट हैज अ बैटरी एंड ऑल राइट Or माय बॉडी इज प्रोड्यूसिंग हीट बिकॉज केमिकल एनर्जी राइट है ना बट अ नॉन लिविंग ऐसे इन जनरल ऑब्जेक्ट विल नॉट द पेन विल नॉट प्रोड्यूस हीट राइट इज इट रेडिएटिंग हीट Yes. What do you mean by radiating and producing? प्रोड्यूसिंग मतलब अंदर उसके बन रहा है कुछ है मैकेनिज्म जिससे बन रहा है मतलब Okay, okay. if you keep a pen in like a hot sun, it will still absorb the heat that's given to it. So it will एक also बताता हूँ मैं डिफरेंस प्रोड्यूसिंग और रेडिएटिंग में ना I mean, I can tell. suppose you have ill feelings for Adi you want to punch him your ill feelings are produced with you but if you really punch him that is radiating Okay. okay Now I get it. okay why I also think the same but I need to know why Almost okay. I don't. I got the gist of it. Yeah. I was, No, he's just getting angry. He thinks about punching me. But oh no! Yeah. When You actually have carbon moisture that you produce, right? Hmm. But then when you're radiating, even I'm radiating, but that's in my head, that's the thing happening around me. wait, when you radiate heat, your body cools down. yes Then you produce heat, and when you produce heat, your body still remains the same. It increases. I have not said that when you produce heat Hmm. I have not said that your temperature will go higher or lower okay producing heat is different matlab, it is not affecting your temperature yes I touch the phone. The phone feels hot. Touch. Huh? phones feels hot to touch Like when yeah you and heat it, yeah Is yeah it producing heat or is it radiating? but what is it the phone It's the phone- conduction. see producing heat is not a factor of whether you touch it or not whether you can feel it or not It's conduction. Okay. If Okay. you feel, then it's conduction. radiating heat is a factor of you touching and finding it hot Hmm. ठीक है okay so thing is we are only talking of radiation and absorption okay so whether it's radiating and absorbing okay it is not a factor of whether it is producing or not all bodies radiate heat all bodies absorb heat if the temperature of something is constant it is radiating and absorbing at the same rate समझ में आया ठीक is the temperature of that bottle constant no. no अच्छा why if it is not constant then it is changing with time Okay, yeah, it is constant if you keep it at a constant temperature. have At I, this point. Oh yeah, it is. have I kept it Yeah. And that way it's over.
Is it kept at constant temperature? Yeah, it is. Okay. It could change though. I mean, night में कम हो जाएगा. Yeah, Night में but the surrounding temperature. कम तो bottle भी कम. Yeah. ठीक है. अभी right now surround temperature मैंने fix कर दिया 22 degrees Celsius. What is the temperature of bottle? 20 degrees. 20 degrees. Okay, 22 degrees, kind of. No, it can't be 22. Yeah, it Depends on can't be. what is the temperature? It's The temperature of the water. Inside the water temperature. अच्छा, very good. So you're saying it is 20. Yeah. ठीक है. 20. After a point, it will come up to 20. Like, Yeah. एक मिनट. अभी room temperature 22 है. मैं पूछ रहा हूँ bottle का temperature कितना है? Okay. 22 है. No, I don't. After a point. It depends on the original temperature of the bottle, like the water. What is the original temperature of the water in the bottle? I don't know. Let's say. I don't know. Okay, let's say 25. I have no clue. Then. अच्छा. I don't know. Sir, अच्छा ठीक है, तुम बोलो कि Okay, at the maximum will. अगर सेम नहीं है तो ज्यादा है कम है, एक पकड़ लो कुछ भी, क्या ज्यादा है, मान लो 20, चलो ज्यादा है, अच्छा मान लो ज्यादा है, अभी ज्यादा है, अभी 25 है उसका, रूम टेम्परेचर 22 है ना, क्या होगा, ये 25 है, बाहर 22 है, क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में? Heat reduce. रिड्यूस होगा, वो रेडिएट करेगा, ज्यादा करेगा, कब तक करेगा? Till it reaches 22, तो मतलब अभी टेम्परेचर कितना है? 20. 22। Midland is just 22, not the common. अरे बाहर का एनवायरनमेंट ही तो, कॉमन एनवायरनमेंट का वो नहीं आता, एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्रीज, सराउंडिंग डज नॉट इंक्रीज, दैट इज कौन सा हीट एनवायरनमेंट में चला गया ना, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्योंकि एनवायरनमेंट इनफाइनाइट है, इसलिए फिजिक्स वाइज होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है ना, पर थोड़े थोड़े से नहीं होता है। The bottle is a very small spectrum of. अभी एक काम करो, प्लास्टिक का बॉटल दो इधर, ये प्लास्टिक का बॉटल और स्टील का बॉटल, ठीक, अब इधर आओ, ये दोनों मतलब 22 पे होने चाहिए ना, हो ना, अगर नहीं है तो कम आ जाएंगे 22 पे, हाँ तो फिर को छू के देखो, इसको दोनों को छू आके, कूलर, कौन सा कूलर? पर अभी हमने बोला ये 22 ही होना चाहिए, मान लो कूलर है, मान लो ये 20 है, अगर ये 20 है, दिस फील्स कूलर टू टच, राइट, अगर ये 20 है, कम है मतलब, तो फिर ये एनवायरनमेंट से हीट ले लेगा और 22 पे आ जाएगा, मतलब 22 तो पक्का है, थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है 22 है, ये भी 22 है, क्यों नहीं यार, तो फिर मैं इनफ टाइम दूंगा कि आ जाएगा, इनफ टाइम पर तो आ जाएगा ना, After a point of time, it will heat up to इट विल रीच 22, रूम टेम्परेचर रीच होगा कि नहीं होगा? देखो दो अलग अलग टेम्परेचर साथ में नहीं रह सकते, अगर उनको टाइम दोगे तो बराबर आएंगे, ये मतलब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडीज को टच करोगे तो वो दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे, आफ्टर इनफ टाइम, कहाँ नहीं रह, मैं बोल रहा नहीं रह सकते, ये प्रिंसिपल है, इसका मतलब जो तुम्हारा जो परसेप्शन है कि ये गर्म है और ये ठंडा, ये गलत है, ये भी 22, ये भी 22 है, दोनों का टेम्परेचर क्या है? हाँ? दोनों का टेम्परेचर क्या है? 22 है, तो फिर ठंडा क्यों लग रहा है ये छू के? Metal is a good conductor. हाँ देखो, कोई भी चीज ऐसे जब छूते हो ना, इसको जब टच करते हो तो इससे जो तुम्हारा, अच्छा इसमें ज्यादा टेम्परेचर किसका है, इसका कि इसका? हाथ का कितना है? 37, हाँ, और बॉटल का कितना है? 22. रूम टेम्परेचर, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है? फ्रॉम द हैंड टू बॉटम, यही जो हीट जो मेरे हाथ से निकल के जा रही है ना, इसी को मेरा दिमाग पड़ता है कि ये ठंडा बॉटल है, अगर मैं बर्फ को छूता हूँ तो हीट मेरी निकलती है ना हाथ से, Because it's respect with you, you feel it's cold. हाँ मतलब अरे तो 37 ये भी है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, अभी 37 और 22 Yeah, से yeah, yeah. तो ठंडा क्यों लग रहा है? Because bottle can move. The heat. हाँ ज्यादा, इसका कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो क्या हो रहा है कि जो मेरा हीट उंगली से निकल रहा है ना, ये फास्टर इस बॉटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो हाथ का टेम्परेचर कितना? 37, बॉटल कितना? 22, इधर भी हाथ का टेम्परेचर कितना? 37, बॉटल कितना? 22, लेकिन ये ज्यादा ठंडा लग रहा है छूने में, क्योंकि The part will be faster. हाँ हीट ट्रांसफर इज हैपनिंग फास्टर, के इसका हाइयर है, समझ में आ गया? ये लिख लो, Waiting for you, but yeah, I will try. To understand also about your. हैव यू अंडरस्टूड? I will. 11th graders, Yes, sir. Yeah. write it. Little bit. So how do you write it? I mean, you pen, paper,
memory, logic. Okay, what do I write? पहले लिखना शुरू करो, then I'll write something. Make these 2 bottles. Right. I will make you write. Body temperature is around 37 degrees Celsius, right? Okay, bottle temperature. I will make you write different difficult things and different things. Is 22 degrees Celsius. Did you understand? Bottle of, I'm not going to talk about metal is also 22 degrees Celsius. Things we were bottle of metal and oh, confidence in us. Nah, I'm talking about the heartbeats. See the big enemy. Not that bad. Huh? Oh, and- हम लोग को और लिखना है क्या? 2-3 पेज? हाँ, लिखो. It is possible कि ऐसे 2 liquids नहीं 2 अलग material दो हाँ. and touch पे भी feel कि one's cooler than the other, but if you use like a thermometer, Yes. temperature will be the same. Yes. You can handle some. How about turning like 1/4 of that into that kind of story? सारे ह्यूमंस का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, फिर भी एक्स का हार्ट तो कोल्डर होता है ना. मैंने बोला सारे ह्यूमंस का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर भी एक्स का हार्ट तो कोल्ड होता है. Oh, वो बोलती है ऐसे क्यों होता है? अच्छा हाँ, ये भी होता है ना. वो तो फिर उनका टेम्परेचर ही 1-2 डिग्री कम हो सकता है. मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि सबका टेम्परेचर. You made a joke logical question. Why? नहीं, अलग अलग हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा सा. 37. why are you laughing? Yeah, obviously. नहीं, she is not laughing at you. He. Who he? What's it? Arya is a girl. But you made a. Oh, Watson, you're saying. Very scientific. Integration. ठीक है. I am very lost. What's happening? What? What exactly is happening? Nothing. Happening. Can we fear the thing? No, they can't say this. Oh, they can. They can. They can see you, not us. Oh, they can see you, they can't see me. No. How can you see us when you're sitting here? When I was sitting here, you can see Sia. ठीक है, बस. Listen. ओके, तुम्हारा जो फिंगर टिप्स में स्टीफेंस लॉ देखो, एक कहीं पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्नैपशॉट्स लिखा है. पीछे जाओ, थियरी पीछे जाओ, बैक.
Yeah, but then he's in front. I have told you 5 times. Don't trust Adi. So why do you have an agenda against me only? Today is 6th. So, I mean 6th time. I'm saying. but why? Because we do it in the first time. Mm.